Assalamu alaikum. My name is Asif and my partner is Atif Sen. We are student of BSN third semester from Beacon Institute of Hyderabad. Now I will explain lung sounds. These sounds are produced when air traveling through bronchi to lung tissues. They produce waves, sound waves. We listen sound waves on chest wall. ये जो हमें चेस्ट वाल पे सुनाई देते हैं साउंड जो वो वेव्स के थ्रू हमारे चेस्ट वाल से आते हैं। और लंग साउंड जो है वो हमारे ब्रीथिंग के दौरान प्रोड्यूस होते हैं जब एयर ट्रेवल करती है हमारे ब्रोंकाई से। और ये तीन टाइप के नॉर्मल साउंड होते हैं। सबसे पहले हमारा ब्रंकल साउंड जो है हमारे क्लिनिकल स्पेस में मिलता है जो स्टर्नम के दोनों साइड पे। और दूसरा होता है ब्रोंकोवेसिकुलर, वो जो हमें फर्स्ट एंड सेकंड जो इंटरकोस्टल स्पेस होता है उसी लोकेशन पे मिलता है दोनों साइड पे। और थर्ड जो है हमारा वेसिकुलर साउंड है वो हमारे लंग्स टिश्यूज में मिलता है, जो लंग सराउंडिंग है पूरा टिश्यू है। इन दो लोकेशन को छोड़ के बाकी जो भी हमारी स्पेस है उसी में वेसिकुलर साउंड हमें सुनाई देता है। और अबनॉर्मल साउंड की बात करें तो उसमें हमारा वीजिंग साउंड है जो हाई पिच साउंड होता है और हेड्स होता है। और दूसरा जो है क्रैकल साउंड है वो जो है हाई पिच साउंड होता है और रेसिंग साउंड होता है। और तीसरा जो स्ट्राइडर साउंड है। अब मैं आपको जो प्रोसीजर होता है लंग्स अस्कल्टेशन का वो करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं सब। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज आसिफ। आपका नाम क्या है? आतिफ हुसैन। आतिफ हुसैन। मैं एक स्टूडेंट हूँ नर्सिंग का और मैं आपके अस्कल्टेशन कर रहे हैं और लंग्स साउंड सुनिए ताकि पता चल सके कि आपके लंग्स जो है वो कैसे काम कर रहे हैं, कोई अबनॉर्मलिटीज तो नहीं है या वो नॉर्मल काम करें। आप मुझे इजाजत देते कि मैं आपके लंग्स की जो है अस्कल्टेशन कर सकूँ? जी बिल्कुल इजाजत।